Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Oraan Podcast. This is Halima. We're here to talk about uncomfortable conversations around money. And today we have Junaid, Assistant Operations Manager at Oraan. And he is here to talk about his journey with money as a young man and relationship around money. So, welcome, Junaid. Thank you so much. How are you today? I'm doing good. Great. So Junaid, let's start with आपकी पैसों के साथ relationship कैसी है? Very bad because मतलब my mom is always telling me कि शादी होने वाली है, you have expenses, so start saving. But मुझे कोई saving का वो नहीं है. I have to meet my wants basically, so I don't save at all. So ये अभी obviously आपकी life की journey थोड़ी सी change हो गई है, but like शुरू से जब आपने अपनी jobs करना शुरू करी है, even as a student, right? How did you, like, what was that relationship with money? Okay, it was always very love-hate relationship I can say, क्योंकि मेरे घर में हमेशा से यही था कि अगर तुम्हें कुछ भी मतलब we'll provide for the necessities, but अगर कोई भी दूसरे शौक हैं वो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे. So I started teaching from A levels basically कि अगर मुझे कितने साल के थे आप? I think A levels में I would be around 18, 17, Okay. something like that. So I've been teaching. फिर थोड़े अपनी चीज़ें, like I got my first bike from my own money. Nice. फिर मैं like I used to tell my mom कि मुझे PlayStation चाहिए, आप मुझे दिलाएं, तो she was like नहीं, तो फिर मैंने save किया, I got it खुद. And then by the mid IBA like university फिर मैं अपनी फीस देने लग गया था. तो I had to save money. और फिर मैं अपने finance के जो बंदे थे उनको कहता था कि भाई I would need some breaks while paying fees क्योंकि मैं एक साथ नहीं दे सकता. I don't want to burden my family. So it was always very hand to mouth and all. So when you talk about savings, right, as a student, so आप किस तरीके से सेव करते थे? क्या savings, like mindset क्या होता था savings के around? Okay, savings का mindset तो मतलब अगर मेरे पास पैसे हैं तो I'll spend it, right? तो मेरा हमेशा से ये था कि I have to be under any obligation. So I either used to give the money to my mom, या तो मैं कहता था कि आप मेरी कोई BC डाल दें और मुझे इस वक्त पैसे देने हैं, आप मुझे उस वक्त दे दिएगा. मेरे पास पैसे रहेंगे तो मैं नहीं, like I can't do anything about it. So it was always like that. तो मेरे हमेशा से दिमाग में यही रहा है कि okay, if I'm earning 10K, 5K savings में मतलब obligation के तौर पे, तो I don't treat it as savings but as an obligation कि I have to do it. Yeah. So that is what I'm trying to do. आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी यहाँ पर कि BC से या फोर्स्ड सेविंग के तरीके से आपने सेविंग्स करी है. ये कॉन्सेप्ट या ये आपको इस आइडिया का या इस कॉन्सेप्ट का पता कैसे चला एंड लाइक व्हाट वाज It has been in my family since the beginning. Like हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई भी हमें बड़ा एक्सपेंस करना है, like renovation और मेरा रूम रेनोवेट करना था या AC लगाना और something like that, तो हमने हमेशा BC डाल के and then we have planned everything accordingly. For example कि अभी मुझे अपना रूम रेनोवेट करना था तो मैंने यही बोला कि okay, I'll do it in December. तो मैंने एक साल पहले से I started, मैंने अम्मी को बोला कि आप मुझे कहीं पे भी कर दें and I was paying every month and then I achieved those targets. It has been in my family since like ever since I can remember. Okay, great. Yeah. And now आप जब now your life is also changing, right? Like you are getting married. Congratulations. Thank you. So that also comes with a certain set of responsibility. Yep. How are you feeling around it? How are you thinking around it? Okay, so I'll be honest, I am stressing about it. I can't really sleep क्योंकि like certain targets दे दिए अम्मी ने भी and then my fiance as well कि okay, these are the things and I really don't want to burden their family. Apart from that कि मुझे big weddings में कोई यकीन नहीं है. I just want a simple close-knit wedding you can say, but दोनों तरफ से it's like pressure. So मुझे उसका भी फिर plan करना है कि how do I get that money and then maintain a living standard that I would want कि if I'm bringing someone living with me, I wouldn't want her to अपनी lifestyle से कोई भी change हो. I would just want her कि वो upgrade ही हो, downgrade ना हो. Do you think ये थोड़ा सा pressure ज़्यादा आदमियों पे या लड़कों पर आता है? Yes, मतलब आता तो है but I don't, मतलब आजकल मेरा एक पर्सनल वो है कि
like everyone's really smart and very educated, so they can make their own decisions. Like अगर मैं ही अपनी fiancée की बात करूँ तो she is मतलब वो मुझे यही कह रही होती है कि okay like you don't have to do everything, we'll split the bills and all, but I don't want that, right? So Why? Because that's the कि मतलब हमेशा से एक यही देखते आ रहे हैं, and I know कि वो ऐसी चीज़ अपने घर पे नहीं करती, तो why would I want that to change for her right now? बट अभी आप दो इंडिविजुअल्स अगर आप अपनी ज़िंदगी साथ शुरू कर रहे Yeah. हैं एंड आई थिंक इस पॉइंट पे ये हमारा माशरा ने भी हमें Exactly. एक कंडीशन करा हुआ है कि इसी पर्टिकुलर काइंड Yeah. ऑफ थिंकिंग से चलेंगे कि हम जो है आदमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव लाइज ऑन द मैन, fortunately or unfortunately, right? Without realizing कि कितना स्ट्रेस वो और एंजाइटी वो आदमी के ऊपर ये वाला माइंडसेट पुट करता है. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डू यू थिंक दैट इट इज़ स्लाइटली अनफेयर टू थिंक लाइक दैट? Okay, so the thing is my dad, मतलब वो typical पाकिस्तानी dads होते हैं ना कि वो बस they'll be there be with you but they won't be there in the hard talks and decisions. Yeah. So मेरे अब्बू से वही वाली relationship है. With mom वो ज़रा practicality और उस पे होती है, and she's always like के क्या नाम है, anything that I face I wouldn't want anyone else to face. Yeah. So you should be smart enough कि आप इस तरह के decisions लो, right? तो इस वजह से, एंड देन द थिंग इज के आई हैव टू होम्स, मेरे Yeah. माई मॉम एंड डैड आर सेपरेटेड, तो आई लिव विद माई मॉम, तो आई हैव टू बी विद हर Yeah. क्योंकि उनके पास कोई नहीं है. तो वो इस वजह से वो ये भी कहती हैं कि यू नो अब अगर मैंने ऐसी लाइफ फेस की है Yeah. तो उसको नहीं आपने कुछ करना है, तो यू हैव टू गिव इन योर ऑल के. Yeah. But is she the one who's making largely these financial decisions in Yes, your house yes, as well, yes, right? yes, that's been the case. और वही सारे आपको, I think majority of mothers and like women in Yeah. in Pakistani homes are making those decisions. Is that a conversation that you've had with your wife to be or current fiance as well? कि dynamics finances के around घर में इस तरीके के हैं, and before getting married के किस तरीके से हम अपने Yeah. finances Yeah. split करेंगे? Like, have you started having those conversations? I try to avoid it, I'll be honest, but maham जो है वो बहुत इन conversations को engage करती है, and I'm मतलब I think she will be the one making these decisions, financial decisions, because I know myself, मैं थोड़ा सा like because I'm thinking about these things at Yeah. night, and also I would want कि मैं अगर throughout the day I keep myself distracted and not कि मैं अपना पूरा दिन ही उसमें लगा के अपना दिन गुजार रहा हूँ. So that's my mentality. But that's something that you've perceived. आपने बात खुल के इस वक्त बात नहीं करी है कि it's a very touchy topic, especially right now. तो मैं अभी why do you avoid think it's a touchy topic? Like a lot of people think and perceive कि ये touchy topic Yep. होता है. But in reality that might not be true. Yep. So why is it so uncomfortable for you? Again, it's the conditioning कि मुझे लगता है कि if I'm having this conversation with someone, मतलब be it anyone, it ऐसा लगता है कि it's a weakness, right? कि मतलब I am unable to do something, मतलब मैं ज़्यादा provide नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा, और I won't have any savings for a rainy day, right? तो इसलिए मुझे बस होता है, फिर मैं उसी जोन में चला जाता हूँ कि ओके अब व्हाट विल दैट अदर पर्सन थिंक, राइट? तो अब महाम के केस में भी यही है कि शी ट्राइज टू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस विद मी, तो आई एम लाइक ओके वील जस्ट सी व्हेन द टाइम कम्स, अभी लेट्स जस्ट go with the flow. Yeah. But going with the flow is also like it's not ये वाली जो hard conversations होती हैं especially शादी से पहले around finances also allows you to set those expectations and boundaries well enough beforehand, right? And I think that's part of the reasons why we also because these are so hard conversations, and for the reasons that you mentioned as well, थोड़ी सी insecure feeling होती है, थोड़ी सी feeling उस दूसरे इंसान को थोड़ा सा uncomfortable नहीं provide करना. There's so many already changes that are coming into our life. But these
conversations, at least in my experience, शादी से पहले बात कर लेना, थोड़ी सी expectation set कर लेना, are important so that you both are aware of what your aspirations and what your goals are as well, right? But unfortunately हमारा माशरा ऐसी conversations को इतना encourage करता है, और it's actually looked down upon for reasons that you mentioned. How are you thinking about changing, if at all? नहीं, I am, because मेरी अम्मी भी मुझे यही कहती हैं, like as you mentioned कि these are very important conversations, you know, आप especially when you're getting married and all, it's not about कि आप अभी क्या कर रहे हो and how lovey dovey is your life right now, but you have to be, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी ज़िंदगी होगी it would be based on real life scenarios, right? तो अगर आप उसी के लिए prepared नहीं हो तो फिर आपको बहुत मसला होगा, and that's what my mom and mom keeps on telling me कि आप at least just talk about it ना, अगर आप uncomfortable भी हो तो थोड़ा थोड़ा करके करो, it's not a problem, like just what are your expenses, like how much can you save, it's not like कि अगर आपकी इतनी एक certain amount salary है you have to save 50%, but just start with the little things and try not to spend money, like अभी आजकल मुझे एक नया quote के if you don't need it, like if you won't use it after a week you don't need it, right? तो इसलिए फिर उसके अराउंड आई एम ट्राइंग टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली कि ओके अगर इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा एक हफ्ते बाद, नहीं तो ओके आई विल जस्ट स्क्रैप इट। एंड has your perception on money changed as your life changes? yes, it has, क्योंकि पहले तो यही था कि ओके वॉट एवर आई एम गेटिंग इट्स फॉर मी, बट नाउ ये है कि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक आई एम पेइंग ऑफ बिल्स, I just got a car, तो मुझे उसकी फाइनेंसिंग करनी है एंड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी, पहले होता था कि ओके मनी इज़ फॉर वांट्स, अब हो गया कि ओके अब ज़रूरियात की तरफ फोकस करना है, एंड देन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि ओके आई हैव आई एम, मेरी जो अप्रोच है कि खर्च करने वाली एंड ऑल, इट्स नॉट राइट, मुझे लाइक आई विल हैव टू डू समथिंग, अगर कुछ नहीं होगा तो आई जस्ट फॉलो द ऑब्लिगेशन वाला बिट के ओके मैं अपने आप को ऑब्लिगेट इतना कर दूंगा कि कहीं पैसे लगे हुए मेरे पास ना हो ताकि मैं उनको फिर स्पेंड ना करूँ, एंड आई कैन यूज देम इन द फ्यूचर। When you talk about, because आपकी जैसे responsibility change होती जा रही है, you talked about getting a car on financing as well. Have you noticed कि हमारा जो ecosystem है या infrastructure है, financial infrastructure, उसमें options available हैं लोगों के लिए कि वो आसानी से financing ले सकें? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरा फाइनेंसिंग का प्रोसेस वो लास्टेड फॉर 6 months। पहले मेरी अम्मी कर रही थी, अम्मी को तो डायरेक्ट ही मना कर दिया कि आपको तो नहीं दे सकते, यू सिंगल मदर एंड लिविंग इन अ रेंटल होम, आप तो कर ही नहीं सकती ना, उन्होंने तो पूछा भी नहीं डायरेक्ट। फिर मैंने अपने पहले अम्मी के साथ किया तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आए बिकॉज ऑफ माई मॉम्स क्रेडिट हिस्ट्री, तो दे वर लाइक कि आप अपना अकेले करो, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओके इट्स सो डिफिकल्ट। और फिर द वे करेंसी इज डिवैल्यूएटिंग, और फिर हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है। आई हैव, मतलब अभी आजकल मेरी एज के सारे दोस्त हैं, दे आर मेकिंग सेम डिसीजंस, राइट, कि ईदर गेटिंग अ लोन फॉर देयर हाउस या रेनोवेशन के लिए या गाड़ी के लिए, और उनको इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दे आर लाइक कि यार हम चक्कर ही काटते रहते हैं, वो बोलते कुछ और हैं, अपनी तरफ पूरा लीन इन करवा लेते हैं, और फिर जब आप उनसे बात करो तो बिल्कुल ही एक अनदर पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। तो जैसे हमारे साथ भी यही हुआ था कि हमें बोला कि ओके जस्ट गिव अ, क्या कहते हैं, 10% डाउन पेमेंट एंड यू गुड टू गो। जब अप्रूवल आया तो कह रहे 50% डाउन पेमेंट दो, तो आई हैड टू अरेंज एक्स्ट्रा मनी विद इन लाइक अ वीक। तो ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट तो आपके अप्रूवल के बाद आता है, मतलब शुरू में तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना कि जैसे मैंने उन्हें बोला कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं इतने पैसे दे सकता हूँ, लाइक नहीं हो जाएगा, इससे कम में हो जाएगा, आप बस आ जाएं, ये वो। जब आए अप्रूवल आई, जी सर आपको तो इतनी डाउन पेमेंट देनी है 50%, मैं बोल रहा हूँ मैं कहाँ से करूँगा ना। तो फिर अगेन आई वेंट टू उड़ान एंड मैंने वहीं से एक कमेटी डाल के पे आउट से वो फिर किया था। तो दैट, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हाउ डज दैट मेक यू फील अबाउट कि आपका जो पूरा आउटलुक है एज योर लाइफ चेंजेस एज वेल, हाउ डज दैट मेक यू फील कि अगर मुझे फाइनेंसिंग लेनी है या मुझे अपनी अपवर्ड मोबिलिटी करनी है, क्या मैं अपनी इनकम को कॉन्स्टेंटली ग्रो करने में
time focus करूँ या like how are you thinking? nahi, I realized कि okay, I can't really rely on financing, and also this will be my last क्या कहते हैं something I do. तो मेरा अभी focus यही है कि how I can improve my income and मतलब career इस तरह का हो जाए, and how मतलब make smart decisions based on investments, क्योंकि I think that's the only way I can really have एन इनकम जिससे मैं अपने फिर बाद में जाके नीड्स फुलफिल कर पाऊंगा. आई कैंट रियली रिलाई ऑन फाइनेंसिंग. वैसे भी इन माय ओपिनियन स्पेशली ये बैंक्स वाली एंड ऑल, मेरे ओपिनियन में लाइक आई वाज वेरी क्या कहते हैं रिलक्टेंट टू गो फॉर इट, बट उसके अलावा मैं गाड़ी ले नहीं सकता था अगर मुझे कोई अच्छी गाड़ी पे मूव करना था. अपनी मतलब होता तो वो पुरानी वाली ही रहती. तो बट अभी मेरा माइंड सेट एक तरह से इट्स लाइक अ मोटिवेशन एज वेल कि ओके आई हैव टू मेक सच डिसीजंस कि मैं इस सिचुएशन में ना हूँ, मतलब मैं खुद ही सारा कुछ कर लूँ. That's absolutely true, right? Like it is so difficult to get any kind of financing in this country, and I think it's also really unfortunate. Yeah. Because अगर हमारी young generation mobilize नहीं होगी financially, then उनकी obviously financial capacity नहीं बढ़ेगी, और वो the entire economy gets hampered, especially in this current conditions where everybody is cash strapped, right? So it is that entire ecosystem that needs to come together and change mindsets as well around finances. Thank you so much, Junaid, for coming on this podcast. It was a very, very insightful conversation, and I'm sure you guys also really enjoyed it. Please let us know if you have any other topics that you want us to talk about, and also if you want Junaid to come back on this podcast. Looking forward to it. Thank you so much. Allah Hafiz.